Hello students, in our last topic we studied what are ideal solutions. Let's recapitulate very fast. We studied that these are the solutions which obey Raoult's law at all concentrations and temperatures. We also studied that for these solutions the intermolecular forces among the solvent-solute interactions are of same order as found in solvent molecules, solute molecules. Therefore, in this case there is no change in enthalpy, and in this case there is no change in volume. And last time we also studied that practically there is no solution which is ideal solution. Now let us start discussing what are non-ideal solutions and two types of non-ideal solutions. First of all, what are non-ideal solutions? We will take the reverse of ideal solutions. So what are non-ideal solutions? Point number one, very simple. These are the solutions which do not obey Raoult's law. I repeat, the solutions which do not obey Raoult's law, they are called as non-ideal solutions. Actually, कौन सा solution ideal बनेगा और कौन सा solution नॉन आइडियल बनेगा, ये डिपेंड करता है कि जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स किया जाए तो व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस. अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस में कोई चेंज ना आए, सॉल्यूशन विल बी आइडियल. लेकिन अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस जो डेवलप होंगी सॉल्यूशन में, इफ दीज इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर और इफ दीज इंट्रैक्शंस आर वीकर, देन students, then solution will be non-ideal. So as far as non-ideal solution is concerned, first of all we will say that Raoult's law is not obeyed. And if you look at the board, if we say that these are the solutions which do not obey Raoult's law, it means that PS, that is vapor pressure of the solution, will not be equal to PA plus PB. Also, vapor pressure of the solvent will not be equal to P naught A into XA, and also PB will not be equals to, student here, PB will not be equals to P naught B into XB. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नॉट इक्वल टू आ रहा है. तो स्टूडेंट ये नॉट इक्वल टू क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है. अब हम यहाँ यही स्टडी करेंगे कि यहाँ राउल्ट्स लॉ ओबे क्यों नहीं हो रहा है. बिकॉज व्हेन वी मिक्स सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, new interactions are developed between the solvent solute particles, and these new interactions are either stronger or weaker than the solvent solvent interactions and solute solute interactions. That is the main point which makes the solution non-ideal. Let's take this point at the board. In case of non-ideal solutions, solvent solute interactions are either stronger or weaker than
solvent solvent interactions and solute solute interactions। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बात करी, हमने सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट में मिक्स किया, सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। इन द सॉल्यूशन न्यू टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डेवलप्ड between the solvent solute particles. If these interactions are stronger or weaker than the solvent solvent solute solute interactions, the solution has to be non-ideal solution. Now let us explain this case in two different ways. पहले हम ये सपोज करते हैं कि if solvent solute interactions are stronger than solvent solvent interactions and solute solute interactions, students, what will happen? सोचिएगा इसके ऊपर। if solvent solute interactions stronger होंगी, then new stronger interactions are developed. Remember, whenever stronger intermolecular forces are developed between the molecules, some amount of energy is released. So if we prepare a solution in that solution, if solvent solute interactions are stronger, then it means that some energy will be released in the formation of that solution. And if some energy is released in the formation of that solution, it means that there will be change in the enthalpy of the solution on mixing the solute with the solvent. So delta H will not be equal to 0 in this case as found in ideal solutions. तो इस केस में डेल्टा एच का वैल्यू 0 नहीं होगा। बोर्ड पे देखिएगा, डेफिनेटली इंथैल्पी चेंज अकर करेगा। सो डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग सॉल्यूट विद द सॉल्वेंट विल नॉट बी 0। इसका मतलब कि इंथैल्पी में चेंज अकर करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कब कब ये हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपके साथ बात की, इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर स्ट्रॉन्गर, देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, and if some amount of energy will be released in preparing that non-ideal solution, the process will be exothermic, and for that non-ideal solution the value of delta H will be negative. अगर किसी non-ideal solution के लिए सबसे पहले solution के लिए delta H का वैल्यू 0 नहीं है, it means that it's a non-ideal solution. When delta H is not 0, then delta H can be negative, delta H can be positive. When delta H is negative, it means that in the preparation of solution, some amount of heat energy is being released. और heat energy non-ideal solution को prepare करते समय तभी release होगी if solvent solute interactions are stronger. So if solvent solute interactions are stronger, some amount of energy will be released, the process will be exothermic, and delta H for that non-ideal solution will be negative. Now students, ऐसा भी हो सकता है कि हमने non-ideal solution prepare किया, during the preparation of that non-ideal solution we discover that the new forces which are developed between the solvent solute particles, these forces are weaker. अगर solvent solute interactions weaker हैं, किससे? ओरिजिनल फोर्सेस से जो solvent में मिल रही हैं, जो solute पार्टिकल्स में मिल रही हैं,
अगर उनके कंपैरिजन में ये जो फोर्सेस हमें मिल रही हैं बिटवीन द सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर ये वीक हैं तो स्टूडेंट खुद आइडिया लगाइए इसके बारे में. If new forces which are developed between the solvent and solute particles, if they are weak, then weak forces are developed. Some amount of energy is absorbed. The process is endothermic, and at that time, the value of delta H will come to be positive. तो किसी भी नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होगा. कब होगा? when solvent solute interactions are weaker. नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होगा. कब होगा? when solvent solute interactions are stronger. It means that for a non-ideal solution the value of delta H will be either positive or negative. ऐसे non-ideal solutions जिनके लिए डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होगा they will be called as non-ideal solutions with the positive deviations, and such non-ideal solutions for which the value of delta H is negative they will be called as non-ideal solutions with the negative deviations. वो मैं अपने अगले पार्ट में लूंगा. Next point, change in volume, that is delta V on mixing the solute with the solvent, that will also not be equal to 0. तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देते हैं. आइडियल सोल्यूशन में तो आप यही करे थे ना कि सोल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन दैट इज इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस. इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. व्हेनेवर अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, डेफिनेटली there is some change in the volume of the solution, and again this change in the volume of the solution depends on the, किस पे डिपेंड करता है? अगेन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फाउंड अमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. तो फिर यहां पे स्टूडेंट हमें देखना होगा, आपको सपोज करना होगा कि इफ सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर. I repeat, if solvent solute interactions are stronger, तो what will happen? Stronger interactions होने से क्या होगा? Solvent solute particles close आ जाएंगे. Solvent solute particles जब close आएंगे उनके between species कम होगी और solution का volume decrease होगा, और जब solution का volume decrease होगा delta V will be negative. तो याद रखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा V का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है. द वैल्यू ऑफ डेल्टा V इज नेगेटिव. इट सिंपली मीन्स दैट देयर इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम तभी डिक्रीज करेगा व्हेन सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस. तो यहां पे फोकस कीजिए स्टूडेंट्स. अब यहां पे देखिए डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है. इसका मतलब कि चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है. डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव होना मींस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज आया है. क्या चेंज आया है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है. कैसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इस केस में इंक्रीज हो सकता है? अगेन सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है. इफ सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस वीक होंगी देन द ओरिजिनल फोर्सेस फाउंड इन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस, अगर इनसे सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस अगर वीक होंगी तो सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. एंड इन सच अ केस डेल्टा V कैन बी पॉजिटिव. डेल्टा V पॉजिटिव, देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. डेल्टा V इज पॉजिटिव, देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज तभी करेगा अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस वीक हैं. डेल्टा V इज नेगेटिव, इट मींस दैट देयर इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज तभी करेगा व्हेन सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर
stronger, and we have several examples of non-ideal solutions. और कुछ मैंने 1-2 examples यहाँ पे लिख के रखा है non-ideal solutions का. ethyl alcohol and water, mixture of chloroform and acetone, these are some non-ideal solutions. This is a very brief account about the non-ideal solutions. So what are non-ideal solutions? Let us recapitulate in 1 minute. A, it's a solution which does not obey Raoult's law. B, it's a solution in which the solvent-solute interactions are either stronger or weaker than original solvent-solvent interactions, solute-solute interactions. Third point, these are the solutions for which delta H is not equal to 0. Delta H can be positive, delta H can be negative. And number 4, these are the solutions for which there is a change in the volume of the solution, that is delta V is not equal to 0, delta V can be positive and delta V can be negative. तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में कुछ एक खास पॉइंट फाइंड आउट किया होगा कि कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा V पॉजिटिव, कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा V नेगेटिव. ऑन द बेसिस ऑफ दिस we classify non-ideal solutions into 2 types. What are those 2 types? Non-ideal solutions with positive deviations and non-ideal solutions with negative deviations. और वो मैं अपने next lecture में ले रहा हूँ. Thank you.